Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Well, my request to all of you. Good morning. Good morning. My request to all of you that you please mute your mic. Okay, that is my request to all of you. You will unmute your mic only if I tell you that you unmute, then you unmute and ask the question. Well, from all of you, how many of you are from Bengali medium schoolings? You have done your schooling, class 11, 12, 9, 10, 11, 12 from Bengali medium. Can you please raise your hand? There is an option to raise your hand in the reactions. There is an option in the reactions that you want to raise your hand. Just click on raise hand. How many of you are from Bengali medium or Assamese medium or Hindi medium? Okay, only one. It's great. Rest all of you two. आप लोग अगर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम, बंगाली ऐसा अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा किसी और मीडियम का है तो आप लोग हाथ ऊपर कीजिए या रिएक्शंस पे जाके आप लोग को एक रेज हैंड बोल के दिखाई देगा, उसमें क्लिक कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा. So 2 students are from 3. अच्छा 3 है जो बंगाली मीडियम और एसएमएस मीडियम से है. और कोई है? और कोई है? बंगाली मीडियम, एसएमएस मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम. ओके ओके, आप लोग हाथ नीचे कर दीजिए. यू लोअर योर हैंड. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. So हम लोग पहले भी मिल चुके हैं. Many students are there. Many students were there, and earlier we met also somewhere else, not in the Zoom. And this is our first class. ये हमारा पहला क्लास है. और मैं ये क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ. How to study? मैं ये always कहता हूँ, how to study is very important. आप सभी ने क्लास 11 और 12 में फिजिक्स पढ़ा है. हाँ सर. और आप लोग को फिजिक्स बहुत सारे लोग हैं कि आप लोग को अच्छा लगा है फिजिक्स. प्लीज यू म्यूट योर माइक. आप लोग आपका माइक म्यूट रखिए. आप लोग में से बहुत है ऐसा है जिन सबको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगा है. और बहुत सारे ऐसा भी है जिन सबको फिजिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया. ठीक है, तो हम जब शुरू करेंगे तो हम यह समझ कर शुरू करेंगे कि आप लोग को फिजिक्स कुछ भी नहीं आता है और ये फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ऐसा हम सोच कर शुरू करेंगे. हमको ये फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनाना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल. आई होप यू अंडरस्टूड what I want to tell. We will imagine that physics is not interesting. हम ये इमेजिन करेंगे कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और हमको ये इंटरेस्टिंग बनाना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अपना माइक म्यूट कीजिए. ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक. ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक. ओके, नेक्स्ट इज next. फिजिक्स आप लोग ने बहुत सारे फिजिक्स पढ़ा होगा क्लास
11 or 12, many students they study physics, but simply they don't know how to study it in the right way. How to study it in the right way, many of you don't know. So we will try to first learn how to study it in the right way. Now, number one, you see, आप सभी ने एक साल ड्रॉप कर रहे हैं. All of you are dropping 1 year. You are actually losing 1 year of your life. You are dropping 1 year with the intention that you want to prepare for NEET. That is the intention. Or JEE. Some few of you may be for JEE also. So your intention is that you'll have to prepare for NEET or JEE. That is your intention. Now, if you don't prepare in the right way, you will be losing 1 year. Okay, if you don't prepare it in the right way, you will be losing 1 year. If you don't prepare it in the right way, you will be losing 1 year. If you prepare it in the right way, you can crack NEET or JEE. So before you, the option is to prepare in the right way. Now first you will ask, आप लोग पूछेंगे कि right way of preparation क्या है, हम कैसा prepare कर सकते हैं? That is your first question. And first thing you need to do to prepare in the right way is you should start preparing from today. Every day. Every day nowadays you don't have school, so minimum of 12 hours you should drop. Minimum of 12 hours you should dedicate for self-study. Minimum. इससे ज़्यादा आप कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है. नहीं उससे minimum आपको क्या करना है? 12 hours आपको dedicate करना है self-study के लिए. Minimum. Okay. Minimum 12 hours you should dedicate for self-study. A minimum. Achha. Then you divide the time according to subject. Say 12 hours में से आपका 4 hours biology में दिया, 4 hours chemistry, 4 hours physics every day. Every day. Now, when you study physics, the way you have studied class 11 and 12 and the way you studied is completely different. Aryan, you please mute your mic. So what I am telling is that आपको 12 hours minimum self study के लिए रखना है और इन 12 hours में आप आपका हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. मान लीजिए पहले इक्वल रखिए 4 hours for biology, 4 hours for chemistry, 4 hours for physics. इक्वली रखिए. बाद में you can change the time. आपके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए कि फिजिक्स में आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा टाइम दे दीजिए, बायोलॉजी में थोड़ा कम चाहिए या आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में. लेकिन इनिशियली यू शुड डेडिकेट दैट मच टाइम. नाउ टू स्टडी फिजिक्स, आप लोग को ऐसा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि मैं फिजिक्स में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज माई कंसेप्शंस आर नॉट क्लियर. हमारा कंसेप्शन क्लियर नहीं है इसीलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे. आपको ऐसा लग सकता है इन फिजिक्स में. लेकिन आप ये याद रखिए फिजिक्स में क्या होता है, पूरा चीज उल्टा होता है. आप प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व कर पाएंगे, आपका कॉन्सेप्शन तभी क्लियर होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. You see, it's different from mathematics, it's different from chemistry, different from biology. Chemistry, maths, bio, इन सब में क्या है, आपका conceptions clear है, आप problem कर सकते हैं. Physics में उल्टा होता है. Physics में उल्टा होता है. आप problem solve कीजिए, ज्यादा से ज्यादा problem solve कीजिए, आपका concept automatically clear हो जाएगा. Now, क्या करना है आप लोग को क्या करना है?
any book you take, objective physics book, any objective physics book you consider, any objective physics book you take, मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का किताब है. वी विल आल्सो प्रोवाइड सो मेनी प्रॉब्लम्स. हम लोग आप लोगों को डीपीपी देंगे, ये सब देंगे. व्हाट यू डू, आप रोज दे 10 प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईच चैप्टर. सपोज आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस जब पढ़ेंगे तो आप लोग को यूनिट्स एंड डायमेंशन से 10 क्वेश्चंस रैंडमली सिलेक्ट कर दीजिए. ठीक है, 10 questions from that chapter, units and dimensions, आप randomly select कर दीजिए. And then try those 10 problems. Now, when you try those 10 problems, आपको 4-5 problem आप solve कर सकते हैं, 4-5 problem, या एक भी problem नहीं भी solve कर सकते हैं, और 4-5 प्रॉब्लम्स और 3-4 प्रॉब्लम्स. आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. जैसे 10 प्रॉब्लम्स में से हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बात करते हैं, 4-5 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे. बाकी चैप्टर से आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा नहीं. और कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे. अगर 10 में से 10 आपने सॉल्व किया मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है. 10 में से 10 कर लिया इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, आपका सिलेक्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो देन यू ट्राई दिस 10 प्रॉब्लम्स वंस. पहले एक बार ट्राई कीजिए. ये ट्राई करने के बाद आपका कॉपी में जो लिखा है या इस चैप्टर उस चैप्टर में जो लिखा है वो आप एक बार पढ़िए. पहले एक ही बार ट्राई करना है, अच्छा से ट्राई करना है. उसके बाद आपका जो कॉपी है या जो स्टडी मटेरियल है या जो बुक्स है, किताब है, उसमें वो चैप्टर आप पढ़िए एक बार. लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो आपका दिमाग में रखिएगा, आपका दिमाग में वो प्रॉब्लम रखिएगा. आफ्टर रीडिंग वंस, एक बार पढ़ने के बाद आप फिर से ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. वन मोर टाइम, एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. आप एक बार फिर से सॉल्व कीजिए. आप ये आपको ये लगेगा कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे. यू कैन नॉट सॉल्व द गेम. So 10 out of 10 problems you may be able to solve 3 or 4, maximum 5. You should not be able to solve more than 5. 5 problems से ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है. यू शुड नॉट बी एबल टू सॉल्व. आपने अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शंस करेक्ट नहीं है. सिलेक्शंस एनडब्ल्यूटी के हिसाब से या जेडब्ल्यू के हिसाब से सिलेक्शंस नहीं हुआ है. क्योंकि एनडब्ल्यूटी की या जेडब्ल्यू के हिसाब से सिलेक्शंस होता है तो यू नो एवरेज स्कोर इज लेस देन 60 इन नीट. दोज हु गेट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन असम, जिन सबको असम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, इन लोगों का एवरेज स्कोर फिजिक्स में है 60, मतलब 1/3. सो आपको इससे थोड़ा ज्यादा करना है. इससे थोड़ा ज्यादा करना है आपको. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपका जो फर्स्ट, ये देखिए आपने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया. फर्स्ट यू ट्राई वंस, एक बार आप सब प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए. प्रॉब्लम आपका दिमाग में रखिए कि ये प्रॉब्लम है. बाद में क्या कीजिए, आप एक बार वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, किताब से हो या कॉपी जहां आपने लिखा हो क्लास का ये सब, या किसी भी स्टडी मटेरियल से आप ये पढ़ लीजिए एक बार. उसके बाद फिर से आप एक बार ट्राई कीजिए सारे प्रॉब्लम्स को. उसके बाद छूट दीजिए, दूसरा कुछ पढ़िए आप. You do something else, कुछ और पढ़ लीजिए आप. Next day before starting anything, आप कुछ भी शुरू करने से पहले, next day before starting anything, कुछ भी शुरू करने से पहले आप ये जो प्रॉब्लम सबसे नहीं हुआ है वो एक बार फिर से ट्राई कीजिए. ठीक है. सो 3 बार ट्राई करने का बाद, 3 बार आप ट्राई, आप सॉल्यूशंस देखिए. 3 बार ट्राई करने के बाद आप आइदर सॉल्यूशंस देखिए या किसी टीचर से हेल्प ले लीजिए. इतना आपको करना है रोज दिन, एवरीडे. इतना तो आप लोग कर सकते हैं फिजिक्स में. देखिए क्या करना है, स्टेप्स में एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोग को क्या करना है. फर्स्ट आप लोग 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है.
एक बार ट्राई करना है, रैंडमली सिलेक्ट, कोई भी किताब ले लीजिए, रैंडमली सिलेक्ट 10 प्रॉब्लम्स, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। जितना प्रॉब्लम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप वो चैप्टर जो है वो चैप्टर आप पढ़िए एक बार, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए उस दिन के लिए, ये चैप्टर और मत पढ़िए, दूसरा टॉपिक पढ़िए, आप ये टॉपिक में मत जाइए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डायमेंशंस देखा है, डायमेंशंस मत पढ़िए, एरर्स पार्ट पढ़िए, मेजरमेंट का पार्ट पढ़िए, ऐसा कीजिए आप। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन आपका दिमाग में रखिए, आप यू रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, कीप द क्वेश्चंस इन योर माइंड, आपका दिमाग में वो क्वेश्चंस रखिए। नेक्स्ट डे आप पहले फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कुछ भी शुरू करने से पहले आप ये 10 क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लीजिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए, पहले सॉल्यूशन मत लिखिएगा, किसी का हेल्प मत लीजिए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छा है, समझ में नहीं आया तो आप आपका फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, या कोई टीचर से आप बात कर सकते हैं इसके लिए। सो दिस थिंग आपको ये एक साल पूरा नहीं करना है, यू नीड टू डू दिस थिंग ओनली फॉर 3 months every day. After 3 months आपको दिखेगा कि आपका पास एक चेंज आ रहा है, you can solve, at least you can understand how to solve this problem. Okay, so this much you do every day, and after 3 months you will see that you will be in a better position to solve the problem. With this we will start. आप लोग एक काम कीजिए, let me see your face once. आप लोग आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, all of you please switch on your video, all of you, मुझे आप लोग का चेहरा दिखना है, all of you please switch on your video, मुझे आप लोग का चेहरा दिखना है, वीडियो स्विच ऑन कीजिए। आप लोग को मेरा बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। यू डोंट नीड टू अनम्यूट, अनम्यूट मत कीजिए, आप सिर्फ वीडियो ऑन कीजिए, मुझे आप लोग का चेहरा दिखना है। All of you have beautiful faces, all of you have beautiful faces. Okay, आप लोग कहाँ, बाकी सब क्या है, क्या आपने लॉगिन किया और चला गया क्या? लॉगिन किया और चला गया क्या? हम बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है, लॉगिन करके और वीडियो ऑफ करके कहीं घूमने चला जाता है। नहीं सर। ओके, हाँ, बहुत सारे अभी भी ऑन नहीं किया है, इसका मतलब ये आप लोग है कि नहीं है? है सर। सर है सर। लेकिन वीडियो तो आप लोग ने ऑन नहीं किया। चेहरा दिखाइए, शर्माइए मत, चेहरा दिखाइए एक बार। ओके, आप लोग अनम्यूट मत कीजिएगा, यू म्यूट योर माइक। अनम्यूट करने से क्या होगा, दूसरों को प्रॉब्लम होगा। हाँ, वीडियो ऑन करने से आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइक म्यूट अनम्यूट वो सब अनम्यूट ही रखिएगा, सॉरी म्यूट ही रखिएगा, अनम्यूट मत कीजिए माइक को। ओके ओके, नाउ इफ यू विश you can switch off the video. If you wish, you can switch off the video, because I want to see your face. What is the first chapter? You unmute your mic and quickly tell, unmute your mic and then again mute it. Okay, what is your first chapter? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे हम लोग, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। सो ओके सर। व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर यू हैव? आप लोग माइक अनम्यूट करके फटाफट बताइए, फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल वर्ल्ड बोल के एक चैप्टर है,
Yes, है कि नहीं है Sir. फिजिकल वर्ल्ड? First chapter Yes, is sir. physical world. English and Miller. हाँ ठीक है, ओके ओके, यू म्यूट द माइक। सो फिजिकल चैप्टर बोल के जो चैप्टर है वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप लोग पढ़िएगा। Okay, sir. और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। से फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर, फोर फोर्सेस हम फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। देन ये सपोज इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो हम पार्टिकल्स में पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ऐसा हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे units and measurement, units and measurement, ये चैप्टर्स। अब तो ये चैप्टर मिनिमम आइडिया है आपको, you have minimum idea, you read that chapter many times। सर आपको साउंड नहीं आ रहा। In first year we have studied. फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर तो आप लोग का क्लास हुआ है स्कूल में, सेकेंड ईयर ही नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर हुआ है ना आप लोग का क्लास में? Yes, sir. Yes, Okay. sir. सर एचएस सेकंड ईयर सर आधा हुआ, फिर सर ऑफलाइन हो गया, पहले ऑनलाइन हुआ फिर ऑफलाइन हो गया सर एचएस सेकंड ईयर में। सही, ओके, अच्छा ठीक है। आप लोग ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, Yes, sir. हाँ सर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या सिस्टम आप लोग ने पढ़ा है? सीजीएस सिस्टम आप लोग का कॉपी में लिखिए, बाकी एफपी सर एमकेएस, FPS system, MKS. You write in your copy, MKS. सर एमकेएस सिस्टम सर एमकेएस। MKS. Okay, MKS. Yes, sir. History system you write in your copy. में लिखिए। तीन सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम पे आप देखिएगा सी सेंटीमीटर, F is foot, C is centimeter, F is foot, M is meter। सेंटीमीटर, फुट, Yes, sir. मीटर, ये कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? सेंटीमीटर, फुट, मीटर कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। यस सर। मिडिल वाला देखिए, ग्राम, जी मतलब ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, किलोग्राम। मिडिल वाला देखिए, ग्राम, पाउंड, किलोग्राम। ये सब कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, वेट। नो, वेट का यूनिट क्या है? वेट का यूनिट केजी। नो, वेट का यूनिट न्यूटन है। वेट इज फोर्स, वेट एंड मास आर डिफरेंट थिंग्स। So where is for answer Newton? Weight and mass, they are different Sir, Newton. things. Weight is Newton. Weight Yes. is Newton. Yes, on unit है mass. Mass. और ये second है, S is second. Second ये कौन से सिस्टम का यूनिट है? Time. Sir time sir. Time. सर टाइम। Second is the unit of time. Second is the unit of time. So length, centimeter, foot, meter, they are the unit of length. Gram, pound, kilogram, they are the unit of mass. Second is the unit of time. Okay? Now what you do? Yes, sir. You define time. Define time. Yes, आप लोग टाइम को डिफाइन कीजिए, कुछ ट्राई कीजिए। कुछ ट्राई कीजिए।
You try something to define time. Automatic. Yes. What is the definition of time? To measure how long something takes. No, time by definition. Suppose, just imagine that I don't know physics. Imagine I don't know physics. I don't know anything, imagine. And I just ask you, what is time? How will you explain it? How will you define that one to me? Measurement, by its measurement. Hours and minutes shown in clock. Someone else you try. Someone else. Equal Lashkar, आप try कीजिए. To How to measure define? how long something takes. Ongoing sequence of events. Someone else. Tushar Hazarika, can you please try how to define time? Yes, you write your name, Vivo1606, you write your name there so that I can understand your name. So what do you try once again? Second. Measurable pre-occupation action. Duration of period. One by one. So it is the progress. So it is the progression of events from past to present or present into future. No. This Rehanuddin, can you please try? Yes, you Minhaj AB, you try. Sir, second, sir. What a clock creates in classical non-deliverability. So time simply means duration. Duration of period. Well, Measurement of period. well, let me, because I have not got any satisfactory answer. Let me ask you the slightly easier one. The unit of time is second. Mass. No, unit I don't want. I just want you to define mass. So someone asks you, someone don't know physics. Okay, someone don't know physics and ask you what is mass. How will you define it? So weight. It's a weight, sir. Sir, the concept of time is self-evident. What you told? Sir, it's a self-evident. No, what do you mean by that one? Sir, unit of meters. Sir, it means a large quantity, sir, mass. Large quantity Sir, may not be mass. Sir, it's measurement Sir, it's time a large is quantity, what the sir. clock reads. No. Sir, it's a measurement time is what a clock reads. No. And What it the is a clock fundamental reads? quantity. You are here. Well, actually, yeah, she told the right one. That this, you see, length, mass, and time, they are fundamental quantities. Yes, sir. Okay, length, mass, and time are fundamental quantities. Now, what do we mean by fundamental quantities? What do we understand by fundamental quantities? By fundamental quantities, we mean that we cannot express them in terms of some other quantities. Yes, sir. Okay,
You understood? Which basically means that we cannot define them. Okay, you understood? By fundamental quantities, we mean that we cannot express them in terms of any other quantities, which basically means we cannot define them. So if someone asks what is time, it's time only, we don't know. And if someone asks what is time, it's time only, we don't know. We don't know what it is. And though people will laugh at us that we have been to school for 12 or 13 years, huh? And if we tell we don't know what is time, people will laugh at us. But that's the reality. We don't know. We don't know what is time. All we can do is measure time. So the duration of this class is 1 hour 30 minutes. We can measure that one. That the duration of this class is 1 hour 30 minutes. That measurement we can do. You told that we have a clock that is measured. We can measure time. But what it is, we don't know. Likewise, mass. If someone tells mass, then we don't know what is. Okay, if someone asks what is mass, we don't know what it is. We don't know what it is. All we can do is measure mass. Suppose this marker has a mass of 20 grams, we can measure it has mass 20 grams. This mobile phone has a mass of 200 grams. We can measure that its mass is 200 grams. We don't know what is mass. We can only measure. Say, for example, length. You may ask, the distance between these 2 points will be its length. Distance between these 2 points will be its length. You may ask, distance between these 2 points will be its length. But in physics, length between these 2 points is called distance. You got the difference? In our day-to-day life, we tell distance between 2 points is length. In our day-to-day life, we tell like this. In physics, length between 2 points is called distance. Both are same thing, though they are same thing, but in physics, we tell like this. So length, what is length? We don't know, we cannot define. Distance we can define, it's the length between 2 points. So these are the physical quantities which we cannot define, and they are called fundamental quantities. So whenever we get a fundamental quantity, immediately we'll understand that there are no definition for these quantities. All we can do is measure these quantities. We cannot define, we can only measure these quantities. After that, you know, earlier actually people thought, that these are the 3 fundamental quantities we have. This length, mass, and time. These are the only 3 fundamental quantities we have. Earlier people thought like this. But with the advancement of knowledge, people started discovering more and more quantities. They discovered electric current. When they discovered electric current, they found that they cannot express in terms of any other quantities. आपको समझ में आया कि पहले साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम किसी और क्वांटिटी के सहारे उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. सो पहले हम सोच रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन उसके बाद हमने और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का खोज किया. से इलेक्ट्रिक करंट. When electric current was discovered, people don't know what it is. So they considered electric current as fundamental. Then people discovered temperature. ऐसा quantities discover करता गया. So then what happened? All these scientists, they met and they decided on a system of unit. It's called International System of Unit. SI system of units.
हाँ ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या था कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, लेंथ, मास एंड टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद पीपल ने क्या किया, और भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कवर किया, से इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ऐसा कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज पीपल ने डिस्कवर किया जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। Then what happened? All the scientists they met and they gave a system of unit. It is called SI system. This system has 7 fundamental quantities. This system has 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities. One is length. Two is mass. Time. Electric current. Temperature. Luminous intensity. So amount of substance. तो थोड़ा बाद में लिखिएगा, मैं आपको बताया जो होगा लिखने के लिए। बाद में लिखिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। These are the 7 fundamental quantities, ये 7 fundamental quantities। Remember, इनमें से किसी भी क्वांटिटी का डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। If someone asks, कोई पूछता है what is temperature, टेम्परेचर का कोई डेफिनेशन नहीं है। हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, हम वो मेजर कर सकते हैं। अगर बॉडी का हॉटनेस ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, हॉटनेस कम है तो टेम्परेचर कम है। We can measure. We can measure it from the degree of hotness or coldness, but what it is we don't know. हम उसका डेफिनेशन हमारे पास नहीं है अभी तक। ये जो 7 क्वांटिटीज हमने लिखा है वो इन सब का कोई भी डेफिनेशंस नहीं है। So if someone asks what is amount of substance, it's amount of substance of it. We don't know. What is mass? It's mass of it. We don't know. हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं इन सब क्वांटिटीज। So इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए। से आप बाजार में गया, when you go to market to buy potato, आलू खरीदने के लिए गया और तेल खरीदने के लिए गया। You go to market to buy potatoes and oil. तो आप जब बाजार में जाएंगे, जाके आप ये नहीं बोलेंगे give me 2 potatoes or give me 2 oil. आप कैसे बोलेंगे? पोटैटो चाहिए आपको, आलू चाहिए आपको, आप बाजार में गए खरीदने के लिए, आप कैसे बोलेंगे? गिव मी 2, मुझे 2 आलू चाहिए, ऐसा बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? No, sir. हाँ, क्या बोलेंगे? 2 kg. 1 kg, 2 kg. 2 kg potatoes. Say in terms of kg. 1 kg. आपको 2 kg Oil, आलू चाहिए, 2 liter oil. and oil 2 liter oil, ठीक क्या? Right, oil 2 liter, 2 liter oil and 2 kg potato. आप ऐसा पूछेंगे जाके give me 2 liter of potatoes, आप ऐसा पूछेंगे कि give me 2 liter of potatoes? No, No sir. sir, no sir. No, sir. 2 liter of potatoes आप नहीं पूछेंगे कि give me 2 liter of potatoes. You need 2 kg. So you see, every quantity has a standard of measurement. और वो जो standard of measurement है उसको हम units कहते हैं, unit. Every quantity has a standard of measurement और वो standard को हम unit कहेंगे, ठीक है? तो length का SI unit होगा, SI unit होगा मीटर, Meter. mass का SI unit होगा kg, Kg. time is meter, electric current का SI unit क्या है? Ampere. Ampere.
Sir, ampere. टेम्परेचर का Kelvin. Degree Celsius. Sir, Kelvin, sir, temperature. Sir, candela. Kelvin. Candela. मोल, हाँ? Mole. Sir, mole. Sir, time Yes or no? second. Mole. अच्छा मैं ऐसा लिख रहा हूँ आप लोग ने ये कभी किया है यहाँ तक कभी किया है आप कभी कर लीजिए Sir, time second. टाइम इज सेकंड टाइम सेकंड length meter mass kg time second electric current ampere temperature Kelvin luminous intensity candela and all such things ये कॉपी कर लीजिए quickly Yes, done, sir. Sir, done. Sir, done. Quantity का नाम है SI unit SI unit Sir, done. okay well Yes, then sir. okay you know physicist जो भी बड़ा physicist था all great physicists they were some of the laziest सारे physicists बहुत lazy थे all were very lazy you think of Newton का नाम सुना है Newton Newton Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I understand. Newton was sitting under a tree. एक पेड़ के नीचे बैठा था और देख रहा था कि एक एप्पल पड़ रहा है and apple was falling. कोई भी स्मार्ट पीपल वो नहीं देखेंगे कि एक एप्पल का पेड़ से नीचे आ रहा है वो नहीं देखेंगे. So Newton was so lazy you can guess. Einstein, you think of Einstein, he was so lazy. Einstein तो पूरा एक महीना सोया. He was sleeping for 1 whole month. So all these great physicists were very lazy. And suppose for length, they don't want to write L-E-N-G-T-H like they don't want to write like this. They don't want to write L-E-N-G-T-H. They don't want to write M-A-S-S for mass. So they use some shorthand. I remember they're not symbolic shorthand. Now, what shorthand they use? Shorthand I'm using. You see, these first three जो है वो कॉमन है सारे के सारे सिस्टम पे कॉमन है. Insidious system, SI system, MK, I'm sorry, CGS system, MK system, FPS system, सारे के सारे सिस्टम पे कॉमन है. ये तीन length, mass and time. So ये तीनों का क्या करेंगे हम? First alphabet जो है वो हम यूज करेंगे as a shorthand. So length का हम shorthand यूज करेंगे L, mass का shorthand यूज करेंगे M, time या T. ठीक है? ये तीनों का हम shorthand यूज करेंगे. Length, mass and first three alphabet in chemical. और बाकी का जो चार है जो सिर्फ SI सिस्टम पे है बाकी सिस्टम पे नहीं है. You see we have 4. Sir, sound is not coming. Is it? Others, are you getting the sound? Yes, coming. sir. Yes, sir. Yes, sir. Coming, sir. Coming. No, not that clear, sir. No, you check your internet. You check your internet. Sir, I think he had network issue. Okay, sir. Not that clear, sir. Not that clear.
Slower. You check your internet. Maybe it's because of internet connection. Because here everything is good. Here everything is good. Because of internet, आप लोग का internet connection check कर लीजिए एक बार. Okay, so you see, for the first three, we will use the first letter in capital. L, capital, capital M, capital T as the shorthand. Shorthand. और बाकी का जो चार है, जो सिर्फ SI system पे है, बाकी कोई भी system पे नहीं है, only in SI system. This four. For them, as a shorthand, we use their unit. हम उन सबका unit use करेंगे. Ampere का A, Kelvin करके, temperature करके, इसका CV, इसका MO. ठीक है? फर्स्ट जो तीन है उनका फर्स्ट अल्फाबेट इन कैपिटल, बाकी का जो चार है जो सिर्फ एसआई सिस्टम है और दूसरा सिस्टम पे नहीं है, इन लोगों का हम क्या करेंगे, ये यूनिट जो है यूनिट हम यूज करेंगे. यूनिट हम यूज करेंगे इन द नेक्स्ट फोर वी विल ओनली यूज द यूनिट. और हम जब ये सब सिंबल, ये सब शॉर्ट हैंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, then it is called dimensions. Dimension. Any one of you have any questions in this much? No, sir. कोई क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं. तो हमने पढ़ा है एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम में कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7. 7. 7. नीड्स इनका डायमेंशंस आप याद रखिएगा. 7 क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड द डायमेंशंस आप लोग याद रखिएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग ने पूरा कभी कर लिया? Yes, sir. Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Well, this system, yes, system पे, yes, system पे दो supplementary quantities है. Supplementary quantities. This system में दो supplementary quantities. There are two supplementary quantities in this system. दो supplementary quantities है. Number one is called planing. इस system में दो supplementary quantities है और one of the quantities called plane angle. ये plane angle आप सबको पता है. All of you have learned this plane angle. All of you have learned. Plane angle is two lines. दो line आप draw कीजिए जो angle होगा वो plane angle between two lines. ठीक है. Suppose ये दो line है, इन दोनों का बीच जो angle होता है ये plane angle. This angle is plane. The angle between two lines, this angle is plane angle. Angle between two lines. और इसका assignment है. Assignment is radian. इस सिस्टम में दो supplementary quantities है. One is plane angle. Plane angle का मतलब है angle between two lines, and the SI unit is radian. SI unit is radian. और एक है इस सिस्टम पे, it is called solid.
solid angle. Solid angle क्या है? Actually, solid angle क्या है? So it's an angle having 3 dimensions. ये देखिए, ये एक सरफेस है। इसको अगर हम ऐसा ऐसा कर देते हैं कोन के जैसा, कोन आइसक्रीम का कोन है, आप लोग ने देखा होगा आइसक्रीम का कोन। Yes, sir. देखिए, हाँ अभी देखिए, you see there is an angle, ये एक एंगल हो गया यहाँ, this one angle, 3D angle. 3D angle. This is the angle made by a surface, remember, not by lines. ये प्लेन एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन का बीच जो एंगल है वो प्लेन एंगल है। और ये एंगल क्या हुआ? एक सरफेस में एंगल बनाया, इसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। सॉलिड एंगल just like cone. We'll denote it by omega. ये थीटा से हम डिनोट करेंगे और ये ओमेगा से हम डिनोट करेंगे। Plane angle we denote by theta. SI unit we denote, I mean solid angle we denote by omega. And SI unit is stereo. SI unit is stereo. ठीक है, आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल Sir, it's 180 degree. 180 degrees, sir. 180. 180. sir. 180 degree. नो, अब एक सर्कल होने से उसका लेकिन 360 क्या यूनिट क्या है? 360 डिग्री, ठीक है? Radian. Radian. 360 radian. 360 रेडियन तो नहीं हो सकता है, हमारा यूनिट रेडियन है। 90. कन्वर्शन फॉर्मूला क्या है? रेडियन से डिग्री, डिग्री टू रेडियन, कन्वर्शन फॉर्मूला 180 by pi. equals to pi Radian. This is the conversion formula. Yes. Yes, sir. So plane angle maximum theta, maximum value कितना होगा? maximum value कितना हो सकता है? 5 radian. 25, हाँ? सर्कल में जो एंगल होता है 360 होता है। सर्कल, यू नो सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल यू राइट 2 पाई, या 2 पाई वो एंगल होता है। What can be the maximum value of omega? सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? हाँ, सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? What can be the maximum value of omega? Sir, 2 pi. 2 pi, sir. No, आप देखिए सर्कल का मैक्सिमम एंगल 2 पाई होता है, इसके लिए इसका सर्कमफरेंस 360 सर्कल का होता है। सॉलिड एंगल का कितना होगा? आप एक्सपीआर आप कंसीडर कीजिए। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? आप एक्सपीआर कंसीडर कीजिए। हाँ, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? एक्सपीआर आप कंसीडर कीजिए, उसका सरफेस एरिया कितना है? 4/3 pi r square. 4 pi r square. R square area. 4 pi r square. So maximum value, इसका maximum value ओमेगा का क्या होगा? is 4 pi.
Maximum value of plane angle is 2 pi. Maximum value of solid angle is 4 pi. अच्छा, ये दो क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या हो सकता है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डायमेंशंस क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द डायमेंशंस ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल? Sir, 1/4. Dimensions of plane angle and solid angle. They are dimensionless. Dimensionless. Dimensionless, right? इन सब का dimensions नहीं है. Dimensionless. Solid angle and plane angle are dimensionless. Solid angle and plane angle, they are dimensionless. So one point we can learn from here. If a quantity has a unit, it may have a dimension or may not have dimensions. Okay. If a quantity, if a quantity has unit, then it may have dimension or may not have dimensions. If a quantity has unit, then it may have dimensions or may not have dimensions. But a unitless quantity must be dimensionless. But a unitless quantity must be dimensionless. Okay, if a quantity has dimension, it will have a unit. But if a quantity has unit, it may have dimensions, it may not have dimensions. And how to find dimensions of different quantities, all of you know. All of you know how to find dimensions of different quantities. ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन लोग का डायमेंशन सबको पता है. दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, इनका डायमेंशंस नहीं है. बाकी जितना भी क्वांटिटीज है, सारे का सारे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे. We know all other quantities like speed, acceleration, force, momentum, energy, electric field, magnetic field, resistance, capacitance, all are derived quantities. बाकी जितना भी quantities है physics में, सारे का सारे derived quantities है. और derived quantities का dimensions हमको निकालना है. We want to find dimensions of derived quantities. Quickly, you find dimensions of area. Quickly, you can. What is the dimensions of area? Half second है आपके पास बोलने के लिए. What is the dimensions of area? L2. फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला is L square, side square. Dimensions of L square. Volume. Sir, it's M0 L square T0. Volume. L3. 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 L M0 T0 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है.
M power 0, L cube T power 0, you can write. ये आपका ऊपर डिपेंडेंट है. कुछ तो प्रिविलेज आप लोग को भी मिलना चाहिए. अच्छा. Number 3. Density. Quickly write the dimensions of density. Quickly write the dimensions of density. M L to the power minus 3. MS. minus M1 L to the power minus 3. Minus Density is mass by volume, right? Mass by volume. Mass by volume, right? Density is mass by volume. Mass is M. Volume is L cube. So divide by volume means L power minus 2. M L power minus 2. Mass by volume. Okay. Next you find number 4. The dimensions of velocity. L1 T1. L T to the power minus 1. Sir, LT inverse. L T to the minus 1. L T minus 1. Okay. LT minus 1. L T minus 1. And remember, the velocity of every object will have same dimensions. अब कुछ भी velocity सोचिए, you think of any velocity, all will have same dimensions. Number 5. Speed का dimensions क्या होगा हम नहीं लिखेंगे, आप बोलिए फटाफट बोलिए speed का dimensions क्या होगा? फटाफट बोलिए speed हम नहीं लिखेंगे, आप बोलिए इसका dimensions क्या है? Same होगा. LT minus 1. same होगा LT minus 1. मुझे पूछना पड़ेगा सर स्पीड का भी सेम होगा सर LT minus 1. अच्छा आप लोग इसका डायमेंशंस लिखिए quickly acceleration. Quickly you write the dimensions of acceleration. L1 T minus 2. T to the power minus 2. L1 T to the minus 2. LT to the power minus 2. T minus 2. T minus 2. L T minus 2. Okay. Velocity acceleration. Displacement का dimensions क्या होगा? Displacement का dimensions आप quickly बोलिए. Displacement का dimensions क्या है? L1. L. और distance का dimensions क्या है? Distance का dimensions. L1. L1. Distance displacement ये सब का dimensions same होगा. अब momentum का dimensions momentum. ML to the power minus 1. ML to the power minus 1. Momentum का definition क्या है? Definition आप पहले लिखिए. पहले आप लोग सब definition लिखिए. How do you write momentum? Mass into velocity. To velocity. ये definition लिखिए. Mass into velocity पहले आप लिखिए. Mass into velocity और उसके बाद आपका इसका dimensions लिखिए. Mass into velocity. MLT minus 2. T minus 1. Minus MLT minus 1. minus 1. T minus 2 you correct it है. आप गलत मत बोलिए. आप जब गलत बोलेंगे हम भी गलत हो जाएंगे. आप करेक्ट बोलिए. You find the dimensions of force. ML T to the power minus 2. ML T to the power minus 2. ML to the power minus. ML T to the power minus 2. T minus 2. Then number 8. When you find the dimensions of work done. Work done. इसका dimensions कितना होगा? M1 L to T minus 2. ML squared T to the power minus 2. ML squared T to the power minus 2. M
L square T to the power minus L square T to the power minus 2. L square. M L square T to the power minus 2. ठीक है. Number 9. Energy. M1 L2 T minus 2. M1 L2 T to the power minus 2. M L M1 square T L2 to T the minus power 2. minus 3. M1 L2 T minus 2. M1 minus 2. M. L2. T to the power minus 2. T minus 2. T to the power minus 2. T minus 2. किसी भी energy हो, any type of energy. Whether it is kinetic energy, potential energy, chemical energy, magnetic energy, light energy, any type of energy you have, all will have same dimensions. ये आपको याद है, ये सब तो आपको याद होगा कि किसी भी टाइप का एनर्जी हो, किसी भी टाइप का, kinetic energy, mechanical energy, chemical energy, electrical energy, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, सारे का सारे एनर्जीज का डायमेंशन सेम होगा. All of them will have same dimensions. Number 10. Pressure. Pressure का डायमेंशन आप लोग देखिए. तो minus 1 T to M1 minus 2. minus 2. प्रेशर का डेफिनेशन याद है आप लोग को? प्रेशर Force per unit area. प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स पर Force यूनिट by एरिया. area. हाँ, उसका डायमेंशन देखिए. Sir, M L minus 1 T minus 2. M L minus 1 L minus 1 M T L minus minus 1 T minus 2. M L MS. minus 1 T to the power minus 2. L minus 1 T minus 2. Minus 1 T minus 2. Okay. नंबर 11 हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. पावर का डायमेंशंस देखिए. पावर का डायमेंशंस देखिए. M L to the power 2 T to the power minus 3. पावर का डेफिनेशन क्या है? Sir, M L square T minus 3. Energy by time. Power is energy by time. Power is energy by time. So it is M L square T T minus 3. T minus 3, sir. आप लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है सर. Yes, sir. You find the dimensions of refractive index. Dimensionless. So it is dimensionless. Dimensionless. Why it is dimensionless? Why it is dimensionless? It is the ratio of velocity of light in one medium to the another medium. Right. Very much correct. It's the ratio of velocity of light in one medium to the velocity of light in velocity of light in vacuum to the velocity of light. Okay. So it's dimensionless medium. Dimensionless quantity. How do we write dimensionless quantity? सर ये रेशियो है इसलिए सर. हाँ. रेशियो है इसलिए. डायमेंशनलेस सपोज इसका डायमेंशन है m(l2t - 3). अगर एक क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो हम कैसा लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ M0 L0 T0. M0 L0 T0. Sir, M0 L0 T0. T0 m0 l0 t0 ऐसा हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखेंगे. Yes sir. Well, as I told you, आज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. ये जो 12 क्वांटिटीज का डायमेंशंस मैंने बोर्ड पे लिखा है. Yes sir. आप ये सब याद रखिएगा. You just memorize them. Yeah, these 12 quantities that I have written on the board, you memorize them. So some people will tell you कि ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी भी फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चंस लिखिए, इक्वेशन से डिराइव हो जाएगा. इन सब people may tell याद रखने का जरूरत नहीं है.
But you see, in NEET आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही मिलेगा. अगर आपने वो फोर्स का ये डायमेंशंस डिराइव करने बैठ जाएंगे तो आपका 10-15 सेकंड तो वहां चला जाएगा. सो आपको 15 सेकंड जो टाइम है वो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. आप उसको याद ही रखना पड़ेगा. यू विल सेव दैट 15 सेकंड टाइम. Okay, sir. So this 12 quantities that I have written today, you will memorize them. ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पूछा कि फोर्स का डायमेंशंस या आपको फोर्स का डायमेंशंस कहीं यूज करना है, आपको फटाफट लिख लेना चाहिए. You should not be taking 5 or 6 seconds to derive that one. क्योंकि एक सेकंड वहाँ इम्पोर्टेंट होगा. Every second will be important there. अच्छा, आप लोग को तो अभी काम कुछ तो करने का नहीं है घर में, क्योंकि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पूरा फ्री बैठा है. आप लोग एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए फिजिकल क्वांटिटीज का. ऐसा मैंने यहाँ सपोज 12 क्वांटिटीज का लिस्ट बनाया. आप लोग ऐसा सिमिलरली एक लिस्ट बनाइए. फिजिकल कितना क्या क्या क्वांटिटीज है फिजिकल फिजिक्स में, सारे क्वांटिटीज का लिस्ट बनाइए बैठ बैठ के घर में. हाँ, किसी भी किताब का हेल्प मत लीजिए. यू डोंट टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग. किसी भी किताब का हेल्प मत लीजिए. आप सिर्फ जितना भी क्वांटिटीज है सारे क्वांटिटीज का एक लिस्ट बनाइए फिजिक्स में. जो भी आप जो सब क्वांटिटीज आपने पढ़ा होता है, और आप वो क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला आप लिखिए. सपोज टॉर्क इज ए क्वांटिटी. आप लिखिए नंबर 1 टॉर्क. ये टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड is a quantity. Electric field, to calculate electric field, which formula you need? F by Q naught, force experienced by a unit positive charge. आप ऐसा एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का, और वो क्वांटिटी आप कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला लिख दीजिए. I think you can do, all of you can do this much. Yes, sir. Yes, Yes, or sir. no? Yes. Yes, Okay. Yes, sir. And since this is the first class, so we will not do too many things. Any questions do you have? आपको कुछ questions पूछना है तो पूछ सकते हैं. सर आपने कहा था ना कि किसी भी यूनिट मतलब किसी भी यूनिट का डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता कैसा, वो एक एग्जांपल दीजिए. अच्छा, so आपने ये पूछा कि एक क्वांटिटी का यूनिट्स है तो उसका डायमेंशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये आपका क्वेश्चन था. सपोज एज एन एग्जांपल, सर ये एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको कि सपोज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, इसका डायमेंशंस नहीं है. फोर्स फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसका डायमेंशंस है. So, एक क्वांटिटी का यूनिट होने से उसका डायमेंशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. प्लेन एंगल यूनिट है, डायमेंशंस नहीं है. से डिस्प्लेसमेंट यूनिट भी है, डायमेंशंस भी है. लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशंस होगा ही नहीं. से फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशंस नहीं हो सकता है. किसी भी क्वांटिटी का अगर इसका यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशंस नहीं. ठीक है. एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यूनिट नहीं है, इसका डायमेंशंस नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट हैव डायमेंशंस. लेकिन किसी क्वांटिटी का यूनिट्स है तो वी आर नॉट श्योर, वी हैव टू चेक. एज एन एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशंस यूनिट है, डायमेंशंस है. और प्लेन एंगल, उसका यूनिट है, डायमेंशंस नहीं है. बट जनरली in most of the cases, if the quantity has dimensions, it will have a unit, and vice versa. In most of the cases, ये general नहीं है, उसमें कुछ exceptions भी है. Okay, any more questions? ठीक है.
then today we will stop here. हम यहाँ stop कर लेते हैं. Next class हम यहाँ से शुरू करेंगे और मैं आपको कुछ practice problem भेज दूँगा. कुछ practice problem भेज दूँगा. आप वो देख लीजिएगा. You try those problems today. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.